हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बेसिकली हम देखने लगे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप इंटरमीडिएट या फिर बिगिनर हैं, सो आप चाहते हैं कि कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां पे हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, तकरीबन जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन हो गई, वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस हो गई जैसे बूटस्ट्रैप, सीएसएस, एचटीएमएल, और उसके बाद रिएक्ट हो गई। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज किसी एक वेबसाइट से मिले और वो भी exercises के साथ। So how you can grab that website? In this video we are going to see that, so let's get started. आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके आपने लिखना है W3 School। W3 School बेसिकली बहुत नाउन वेबसाइट है जहाँ पे जितनी भी लैंग्वेजेस, आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, वो आपको सिखाई जाती हैं विद एक्सरसाइजेज। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे। लेट्स सपोज हम क्लिक करते हैं जावा पे। ठीक है, अब जावा के अंदर ये बेसिक लेवल के ट्यूटोरियल हैं, जैसे इंट्रो जावा, सिंटैक्स ऑफ जावा। ठीक है, उसके बाद जावा के बिगिनर सिंटैक्सेस, इसके साथ साथ जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड सिंटैक्सेस विद एक्सरसाइजेस। सो let's suppose if I click on Java array list, then I will get the Java array list definition as well as uh, the exercise syntax with example. So you can see from the screen, this is the example. If I want to try by myself, I'll click on this, then I will go to the IDE, then I can run this command and I will see the output of the code. Okay, so this is how you can run the example. So if I go to the advanced topics like Java references, Java compiler, Java exercise, Java quiz, Java server, so these are the advanced topics and syntax which is offered by the W3 School. Like you can see, there are a couple of and hundreds of concepts. If I click on like Python, then you will see all the topics covered by the W3 School, and from the basic concept to intermediate and beginner and then expert level. Okay, so अगर मैं इसको पे क्लिक अगर मैं इस पे क्लिक करूँ Python server, so you will see what is Python server, and then you will see the choose the plan, track your progress. ठीक है, Python server पे यहाँ से आप फ्रीली भी जा सकते हैं। अगर आप एडवांस टॉपिक्स और टूल्स हासिल करना चाहते हैं, देन यू कैन परचेज इट। ठीक है, इसी तरह से सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं। HTML की सर्टिफिकेशन, डेटा एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन, दीज आर द प्रोग्राम्स, फुल फ्रंट एंड वेब डेव सर्टिफिकेट कोर्स. You can see the tags which is included in the certificates. Okay, so this is very good example, and if you are a teacher, then you can go for the teacher page, then you will see the helping material which you can learn and then you can teach the students. Okay, you can see the syllabus, study plan, certificates. This is a very informative and very well known website for those who want to learn computer programming languages. So I hope this video helps you in your career and your learning path. So see you in next video. Till then, stay tuned. Goodbye.